Good morning, everyone. A very good morning to all of you. I hope I am clearly audible and visible. So, this session is after a long gap, but the very reason behind this thing is I wanted everyone to make sure that you are going through the things that we discussed and then we could have moved with more ease. A very good morning, Suraj Beta. Good morning, Vikrant. Jayant, a very good morning. मैं बिल्कुल ठीक हूँ विक्रांत all good, everything is fine. I hope you all are also at pink of your health. So first thing I'd like to know about the experiences that you had for last maybe 15 days since we discussed the strategy for the very first time. Dheeraj beta, a very good morning. Biban, a very good morning. I hope that some of you at least did try to go through the things that I discussed. Priyansu, a very good morning. Sudha beta, a very good morning. Yeah, I'm doing well. Swati beta, a very good morning. So how many of you have at least tried to go through one of the subjects? ठीक है, पहले उसकी बात करते हैं. We'll talk about this thing as well. सुमन बेटा, very good morning. खुश रहिए. And some of you, those who could not, like I said, it is not late. अभी भी देर नहीं हुई है. You'll be easily able to manage. उसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है. अभी festivities आ रही है, थोड़ी और देर होगी. That I know. Okay, most of you will definitely be spending some of the time with your families. You'll be celebrating, तो थोड़ा सा समय जाने वाला है. And that's absolutely fine. That's absolutely okay. ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा आत्मगिलानी नहीं होनी चाहिए. Because in the season of festivities, we lose a week. But it should be a week, not more than that. एक सप्ताह बहुत होता है. Okay. तो मुझे ये बताइए कि कितने लोगों ने एटलीस्ट साइंस एंड टेक या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यू ट्राइड टू कंप्लीट. Okay, because the target was to at least आधा किया हो, half of the chapter, because this MCQ and everything will be discussing. Okay, and I'll give you a way where you'll be able to manage with ease. Great, Nikhil beta, you have done it, wonderful. Okay, Jayant, you did this thing with polity and economy. That's wonderful. You have covered big subjects, so you have exceeded my expectations. I just wanted people to cover the small subjects first. Swati beta, हाँ ठीक है, एक भी कंप्लीट हुआ है, यू आर गोइंग गुड. ठीक है, हमारे टारगेट्स क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा डेज पे फिक्स नहीं होने चाहिए. दिस इज़ नॉट लाइक यू हैव टू फिक्स ए डेट एंड इफ यू डोंट अचीव बाय द डेट यू जस्ट लूज योर एग्जाम. नो, दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम ऐसा सोचें. स्टिल यू हैव टाइम. निशांत बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग. ग्रेट. धीरज बेटा, यू आर गोइंग थ्रू इट, दैट्स वंडरफुल. प्रियांशु, Priyanshu beta, if you are attending the optional classes, I'll suggest that you invest only half of the time for optional, not all the time. Great. Vivan, you have also progressed well. Suman beta, very good. Vivan, Suman, Suraj beta. Great. So you have covered at least one of the subjects. Sridhar, very good morning beta. Nikhil, you have covered, you have tried at least, right? And I hope that this trial includes the revisions. Great. Suraj revised economy. Wonderful. Vikrant. Okay, great. इससे खत्म होना important नहीं है. At least all of you started. That is a good thing. Okay, Sudha beta, you are focusing on your mains exam for BPSC. That's okay. That is okay. Absolutely fine. At least you are on track. हम मेंस की भी तैयारी करते हैं तो हमारा हो रहा है. जयंता, you are done with 65%. That's wonderful. Okay, बहुत सारे बच्चों को लगता है हम मेंस पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स नहीं हो रहा है. That is a false idea. Okay, अब लोग कहने लगे हैं 5 months सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ो. Don't do that. Okay, the reason is even if you qualify prelims, mains में क्या करेंगे? Don't leave your optional so soon. Okay, at least invest 2 hours on that. Malaya beta,
रिवीजन नहीं किया है तो वो पढ़ाई अच्छी नहीं मानी जाएगी बेटा, रिवीजन करेंगे। रिवीजन इज मस्ट। आई कीप टेलिंग पीपल इफ यू डोंट हैव टू रिवाइज डोंट रीड, थोड़ा मजे कर लेंगे। ये मैंने बहुत बार कहा है, रिवीजन इज अ मस्ट। इफ यू कैन नॉट रिवाइज द थिंग्स, द purpose is already defeated. Reading won't help you much until and unless we are ready to revise. Go slow, but make sure that you are revising the things. हाँ जयंता बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड योर हेल्थ इशू इज देयर, बट जब ठीक हो जाएंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मुकेश बेटा खुश रहिए, आई एम ऑल गुड। सो रिविजन इज मस्ट। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर यू आर डूइंग इज रिविजन। इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे रीडिंग क्या है, वो दैट बिकम्स फ्यूटाइल एक्सरसाइज आफ्टर ए वीक ओनली। ओके okay, Nishant beta, you are doing it, so you are contributing towards your prelims as well. Anybody who is focusing on mains, Simi beta, very good morning. Anybody who is focusing on mains, okay, you are reading polity, you are reading history, you are reading geography, you are reading environment and ecology, you are focusing on current affairs, so automatically you are preparing for prelims as well. Okay, the very falsified idea that you have to separate prelims and mains. Okay, many of the people advise this thing, but actually when we think like that, now we are at disadvantage. You don't have to do that. Great Malaya beta, just focus on revisions. This is the most important aspect. Okay, the more you revise, this gives you more clarity, and there is more clarity, it means you make less mistakes. Okay, less mistakes means you lose less marks, and when you lose less marks in negatives, you qualify. Actually, if you'll ask somebody na, what was the problem with your approach in prelims exam, some student who failed in prelims exam, they'll definitely tell you कि negatives ज़्यादा हो गए. Okay, we got negatives. Positives were like we did 60 questions correct and 40 wrong. Okay, that kind of thing is happening with people, and they lose. They fail to qualify. 55 correct and 45 wrong, that kind of situation, which is responsible for most of the failures. हाँ वो मलय बेटा, it is there, आप playlist से देख सकते हैं. Some of the more lectures for answer writing I'll take in future for optional, but optional is complete. Every aspect of the optional is complete. That is in the playlist. You can watch that and you'll get everything. Okay, we have taken more time. I have made sure that you understand everything, so you'll get it. हाँ Sudha beta, if you'll do that thing, na, revisions ultimately gives you confidence. You make less mistake, more clarity gives you confidence. When you are at home, you know that you'll clear the exam. You definitely will clear the exam. Okay, you have to focus on revision. Swati beta, हाँ, now your experience is itself telling you, right, कि हमारे साथ क्या होता है एग्जाम में. So this thing is like you lose less marks than you qualify. Okay, the people who don't lose marks are the people who qualify, because anybody who is working hard, they'll definitely know around 80 questions. They'll able to identify out of 180 questions. लेकिन उस 80 में सही कितना कर लेते हैं, ये डिसाइड करता है कि हम पास होंगे या नहीं. तो सही करने के लिए आज हमारा सेशन है. ओके, बिकॉज वी attempt tests, okay, and we make mistakes there. When we are attempting the test, we are attempting the MCQs, we make certain mistakes which become responsible for our failure. तो उसको हम कैसे सही करेंगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं. हाँ चेतन बेटा, then you must have benefited from that. हरियाणा में ज्योग्राफी ज़्यादा पूछा तो आपका ऑप्शनल है, आपको फायदा हुआ होगा. okay. श्रीधर बेटा, both are good. Both are good. If you have command over language, language is a problem. With public administration, if you do not have command over language, don't take it. Okay, these are kind of optionals where language is more important. ठीक है, आपकी थोड़ा vocabulary अच्छी है, language पे command है, तो थोड़ा effectively आप ज़्यादा अच्छे marks लाते हैं. Public administration. Sociology is like layman's language you can write. Okay, the way you can write in geography. So if you are choosing between these two, my suggestion is if you have good language, both are good, because people are qualifying with all the subjects, even mathematics
anthropology, everything is good, na? But if you have to choose between two, it is based on linguistic skill, जिसकी थोड़ी अच्छी है, public administration उसके लिए बेहतर है. Okay, if you have better language. हाँ, that is good, धीरज बेटा. ओके स्वाति बेटा, तो फिर वो नेट जीआरएफ वाला टाइप कर दिया उन्होंने. स्टेट्स आर लाइक दैट ओनली, बट डोंट वरी, इफ यू वर नॉट एबल टू डू इट, रेस्ट ऑफ द पीपल मस्ट हैव फंबल्ड, सो स्टिल यू आर एट एडवांटेज. आपको फिर भी एडवांटेज, बिकॉज यू नो मोर नेम्स व्हेन कंपेयर्ड विद अदर्स, राइट चेतन एंड स्वाति? जिन्होंने भी हरियाणा का दिया है, आपको नहीं आया तो किसी को नहीं आता था. एग्जाम हॉल के बाहर सब लोग बोलते हैं मुझे आता है, रिजल्ट में नाम नहीं आता है फिर. ओके, so that's not an issue. Focus on mains, you'll be able to manage. Now, like I said, this revision is must, but only revision cannot ensure that you make less mistakes. You have to train your brain to do that. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बातें की हैं. We have discussed that previous year questions are important. Okay, we had gone at length how it is important, how it is not. But today's session is not about previous year questions. We have already discussed the aspects, so I'll not be investing much time on that. Instead, I'll take a small session. This session is not going to be very, very big, but I'll talk about why you should approach MCQs and tests in a certain way. Okay, and I'll tell कि उसका advantage क्या होने वाला है, what you'll gain from doing that. Okay, why I'm asking you to do this thing. Okay, none beta, श्रीधर बेटा, you just have to read your notebook properly. उसमें भी इंग्लिश लिखी हुई, कोई अलग किताब नहीं चाहिए. Compulsory papers, you don't need any books. The way you are writing, you will qualify, I can tell you. Okay, if you can write this much, you will qualify. You need not be worried about the compulsory paper English. Okay, so now how many tests do you think that are important? Okay, first we'll look at how many tests one must appear before prelims in order to have command over the thing. एक भी चीज उससे ज्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे बेटा, मतलब that is more than sufficient. मतलब that is, I have taken lot of lectures, okay, almost 1.5 times more than I do in my paid courses. So you have to rely on that. ठीक है, पेड कोर्सेज में टारगेट होता है टीचर के लिए भी, तो मैं कम समय में करता हूँ. ओके, इसमें बहुत लेंथ पे किया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. उस पर रिलाई करेंगे. ओके, नाउ टेस्ट, लाइक आई सेड, व्हाट डू यू थिंक? सुना होता है आपने कि दीज मेनी टेस्ट देने हैं, दैट वे देना है. तो व्हाट डू यू थिंक एन एवरेज एस्पिरेंट 242 टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, बेटा कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? Okay, probably you got my question wrong. I'm asking what you have heard, at least if you have not tried, what you have heard about the tests. ठीक है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज अभी आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे खरीदने वाले हैं. So how many tests you'll be going for? Okay, we'll take something which is more prudent and which can be controlled and you can get maximum benefit out of it. The choice is yours. ठीक है, I'll not suggest. Okay, चेतन बेटा, that is a good, ठीक है, वो भी ठीक है आपका. okay, बहुत ज़्यादा है वो मेरे हिसाब से. okay, if somebody is like, हाँ ओके, क्लासेस की बात कर रहे हैं, या तो 10,000 MCQs अगेन. ठीक है, MCQs की बात कर लेते हैं, टेस्ट MCQs, हाउ टू गो अबाउट इट. ओके, स्वाति बेटा ठीक है, धीरज ग्रेट, सिमी बेटा बहुत सारा आपने सुना हुआ है. ठीक है, रेंज है वो, विल सी 40-45. ओके, so we'll talk about all these aspects, why you have to be in certain range. Okay, we'll talk about that. The choice is yours. You can buy from the market, you can join everyone. I'll not suggest which test is good or bad, because I believe every test is good, until and unless somebody is like they are inclined for some test. Every test is good because you are practicing. That is more important. हाँ सूरज बेटा, that is also good, but we'll break it because this time we have time, one full length in a week. Okay,
सबके बारे में बात करेंगे. I'll explain everything. One full test every week. I'll talk about, but I'm putting a question mark here. Is it the best strategy? Okay. I'll make it easier for you, and you'll see the way you got benefit with the approach of revision and the subject matter. You'll yourself experience after 2 weeks only. Like I always ask you to follow my suggestions for 2 weeks. Okay. Wholeheartedly, if you'll follow for 2 weeks, you'll see the changes. ठीक है, वो आप अपने आप ही बदलाव देखेंगे कि क्या फायदा हो रहा है. कि by the time you reach your exam, you'll be going for full test. But शुरू से ये करना चाहिए. As far as my experience suggests, नहीं करना चाहिए. Okay. Do you need actually 60 tests? I don't think so. Okay. Personally, I don't feel this should be the case, because already what you are doing, abhi se male beta, you must start it from today. 40 minutes. And I have discussed this thing. One of the session is there. Please watch that session on PYQs. Okay. I guess few weeks, only 1 week before or maybe 2 weeks before I had taken that session. Watch that session. You'll get it how to go about CSAT. PYQs में मैंने discuss किया था. Okay. 60 again. Is it a good idea for somebody who is like 44 years of PYQs के बाद भी क्या हमें 60 चाहिए? How many of you are actually doing this thing that I have suggested? I hope that everybody is like into PYQs. हाँ ठीक है जयंत बेटा, इट्स ऑल राइट. आधा टाइम दीजिए मलय बेटा, इफ यू हैव टू अपीयर इन 2024. डोंट गिव होल ऑफ द टाइम टू ऑप्शनल, बाद में बहुत टफ हो जाएगा. वॉच दैट सेशन. ओके, प्रीवियस 2 सेशंस जहाँ पे 2024 लिखा हुआ है. Go through that session and then decide. Now when you are going through 44 years of previous year questions, I don't think that anybody amongst you needs these many tests. Okay, this is for someone who is actually who have neglected the PYQs. जो सबसे बड़ा नुकसान होता है. Okay, you are going for some coaching का test and you are not focusing on what UPSC has already asked. So that is a blunder. Okay, and when somebody is already studying these 44 years of PYQs, okay, you don't need 60 tests. पहली चीज तो ये समझना है, you actually don't require that. Okay, this is not something that you require. So what is the range? So what is the range? The range is around 30. ठीक है, जो 30 लोग कह रहे थे that is good. 30 तक अगर आप पहुंच सकते हैं because you have time, नहीं तो इसको और less कर सकते हैं. Okay, 30 tests is good. हाँ सुधा बेटा, that is like reading. PYQs को मैंने कहा ये टेस्ट मान के नहीं देंगे. That is like part of subject matter. बहुत ज़्यादा है मलय बेटा, reduce that. Not more than 2. Okay, take 2 only, not 4. Only 2. Okay. 44 years of PYs के बाद 30 tests. Okay, this is the range. Some of you can plus minus 5. Okay, not an issue. Okay, because doing more number of tests cannot ensure that you'll qualify. If you are doing it in a proper manner, then and then only it can give you the advantage that you want. So how we need to approach that? Okay, MCQs को approach कैसे करना है, test को approach कैसे करना है. तो range is clear to everyone. Okay, the range is this because already I have asked you to go through this. Okay, and this is from UPSC. Okay, and this is from some coaching wala. Your choice. Okay, and this is must hai ye. Okay, if you miss this, then you'll be at disadvantage. I don't want anybody to miss the PYQs. Okay, 30 says test is more than enough. Your choice, any coaching, all are good. Okay, like I keep telling you, everybody is working hard. तो आप कर सकते हैं. But ये भी क्या है, many of you will try to go to that center and you'll try to solve that 100 question in a single go at this point in time. Okay, we have to discuss this aspect. वो करना कितना अच्छा है खराब है. हाँ मैं इसकी बात करूँगा. टाइम मैनेजमेंट इन टेस्ट, एवरीथिंग. टेस्ट जब मैंने कहा है तो टाइम मैनेजमेंट पे भी हम बात करेंगे. हाउ टू डू इट आई विल टेल यू.
we'll talk about this aspect as well. Don't be worried. Okay, Chetan beta. Chetan beta, you have to manage the current affairs. You are taking too much time, I guess. If you are investing 10 pages every day has to be the target for current affairs. न्यूज़पेपर अभी मत पढ़िए, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, मैं ग्रुप पे रोज लिखता हूँ, चेतन आप वहाँ पे हैं, ठीक है? पास होने की कोशिश करेंगे, फेल होने की स्ट्रेटजी अगर आपकी है, मैं फिर इस पे एडवाइस नहीं दूंगा। एक न्यूज़पेपर आप कवर करते हैं, ठीक है? अगर आप सारे न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मैगजीन वाले 5-6 का कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा विश्वास करेंगे दूसरों पे, सबसे इफिशिएंट हम ही हैं तो मेरी भी जरूरत नहीं है फिर। यू हैव टू ट्रस्ट पीपल, राइट? जो इतनी मेहनत करके वो मैगजीन निकाल रहे हैं, थोड़ा ट्रस्ट करेंगे उन पे कि दे आर 10 people are better than one me na. All of them have prepared, they have given mains, maybe some of them have given interview. So you have to trust people. Go through magazine, it will reduce your time, okay? And read one article, you'll be able to manage. 5 hours of classes दिसंबर तक करके पढ़ते रहिए धीरे धीरे, उसके बाद 5 hours of classes is not a good idea. Reduce it to maybe 3 if you want to appear in 2024. Okay. Now let's come back to the approach towards MCQs or tests. क्या होना चाहिए? Okay. To gain maximum out of it. Okay, tests. And I'll give you the reason also. How many of you have at least tried one test of 100 questions and discovered that you cannot do that? हाँ चेतन बेटा, बट उसके लिए भी कोई ऐसा रिसोर्स देखिए जो आपका टाइम बचाए. Okay, don't waste more time on that. Okay, don't waste more time on that. निकालते हैं लोग ना, थोड़ा इजी करेंगे अपने लिए. हम कंपटीशन में, वी आर इनटू कंपटीशन, वी जस्ट हैव टू एलिमिनेट everybody in our surrounding. Okay, first stage is like elimination stage, we don't have to get eliminated. Okay, so we have to save time, we have to be smart enough. Now, how many of you have actually tried 100 MCQs, full test, and discovered that you make a lot of mistakes? And you blame your revision. क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने मुझे बताया ये कि मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, इनिशियल की बात कर रहा हूँ, okay? And you blame your revision. But this is not true. Okay? Actually the thing is like you have revised also properly and still you are making mistake. हाँ उषा बेटा, बहुत सारी गलतियां हो जा रही. okay? हाँ डुएबल लगे फिर भी पढ़ेंगे स्वाति बेटा, यही तो ट्रिक है. Most of the people think that we can do, and when they actually attempt the thing, they fail to do it. Minor mistakes that kill your chances. Don't do that. मान नहीं लेंगे कि हो जा रहा है, करेंगे, ठीक है? वो घर पे हो जाता है, एग्जाम में नहीं होता है. द रीजन इज कि हमें लगता है कि होगा, वो होता नहीं है. जस्ट डू इट अगेन एंड अगेन. PYQs इज बुक. ओके, देखिए सबके साथ क्या हो रहा है, you make lot of mistakes and you blame your revision each time. Okay, you make this thing, why it is happening even after like बहुत सारा revision किया and you make mistakes because your brain is not ready to focus for that much time. You haven't trained your brain. आपने अपने दिमाग को अभी ट्रेन नहीं किया है. And when you suddenly do it, you fail to do it. It's not like you have not read well, you have not revised well, you have done everything, but you do it because your brain fails to focus after a certain limit. Certain time limit. Okay, because you think that you'll be doing it for 2 hours, but your brain is not ready to focus to analyze the questions in that pattern. Okay,
तो हमें 100 क्वेश्चन पहला टेस्ट कभी नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था आई स्कोर्ड अराउंड 17-18 मार्क्स इन माय फर्स्ट टेस्ट, जब मैंने पहली बार अपने लाइफ का टेस्ट दिया। एंड द रीजन वाज नॉट लाइक आई वाज नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग, कैजुअली गया हूँ, ठीक है। आउट ऑफ 200 आई स्कोर्ड अराउंड 17-18 एंड आई वाज इन शॉक ऑफ माय लाइफ कि कभी होगा कि नहीं होगा। ओके, द रीजन वाज वेरी सिंपल, माय ब्रेन फेल्ड टू फोकस आफ्टर अ सर्टेन टाइम लिमिट। और ये हम डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। Okay, many a times even when we doing the test, because we force ourselves, okay, and the brain is like it will not focus. So initially we have to avoid this full test, okay, because this is the time when you start with the test. In November, December, everybody will start with this thing. Some of the people might have started, but you are going for full length tests, and that is taking a toll on your score. वो आपकी गलती नहीं है, ठीक है, आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, यू हैव टू कीप फेथ कि मैंने जो किया है वो सही है। द सिंपल रीजन इज फोकस, एंड आई विल आस्क यू टू डू इन अ सर्टेन मैनर वेयर यू विल डिस्कवर कि आपका फोकस बढ़ गया और क्वेश्चन ज़्यादा राइट हो रहे हैं, ठीक है। रिविजन के साथ और गलतियां कम होती जाएंगी, बट इफ यू डू दिस थिंग, द थिंग दैट आई एम आस्किंग यू टू डू फॉर नेक्स्ट 15 days, okay, you'll see that you'll be able to do things better. Automatically the mistakes will half down by at least 50% in next 15 days. 15 दिन में 50% गलतियां कम हो जाएंगी, ठीक है। 90% से नीचे लाना वो आपका स्किल है, 100% नहीं होंगी। मैं ऐसा कोई आइडिया नहीं जानता हूँ, बट सम ऑफ द पीपल आर वेरी एक्यूरेट, तो यू कैन डू दैट। नहीं हटेगा मलय बेटा, मैंने ग्रुप में इतनी बार लिखा है, यू आर नॉट इन द ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। अरे कुछ नहीं हट रहा है, द लेक्चर इनिशियली आई वाज लाइक हटाना होगा, हटेगा भी तो टेलीग्राम पे आई विल मेक इट अवेलेबल, डोंट बी वरीड, अटेंड कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं हट रहा है, अटेंड 2 classes ओनली, आई विल मेक इट अवेलेबल। सो एवरीबडी, सो व्हाट इज द वे इफ सम ऑफ यू आर लाइक दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज। हाँ विक्रांत बेटा हो रहा है। सो माई सजेशन इज टारगेट 15 questions every next, okay, every 2 days maybe, एक ही बार में पर, ठीक है। टेक ए गैप ऑफ 1 day, 15 questions every 2 days, फर्स्ट वीक के पहले वीक में सिर्फ इतना करना है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मोर, ओके, जस्ट 15 questions with full focus, time is not a concern, okay। हाँ उषा बेटा ऐसा होता है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जस्ट चेंज योर अप्रोच। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, आई नो। Being a test, there are 100 questions. I'm asking you to do it in 10 days. 15 questions, 2-2 दिन के बाद करेंगे, ओके। लास्ट वाला पार्ट क्या है कि आपका 10 questions का ही होगा, 1 full test, 15 questions every 2 days, and thereafter analyze, okay. Take your time. I'm not, how to manage time, I'll tell you that as well, okay. How we'll be managing time, we'll do that. ये कर सकते हैं, just 15 days of practice and you'll see a sea of change in your approach and your scores that I'm telling you, okay. So 10 दिन आपको ये करना है, 15 questions every day, okay, एक full test हो गया, and then next every day, ये है आपका फर्स्ट वीक, week 1, okay, 15 questions every day with analysis, understanding and everything. And second week, 25 questions again in the same pattern, 25 questions every 2 days, okay, at one sitting. You just have to do this thing for 2 weeks. If you'll do this thing, you'll see you can focus more, ठीक है। आपका फोकस बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। when you do less number of questions, you'll see that your accuracy is more,
Okay, you're just allowing your brain to process that we have to solve questions and by thinking. Take your time. Time abhi concern nahi hai. Okay, and I want everyone to note it down and practice this thing from today only. Okay, everybody who is like going to try any test paper that is available, online available हो, offline लेके आना है, print out निकालना है, do it. Okay, but not with PYQ. Some random test. PYQs हम 50 वाली stage में करेंगे. Okay. Now this is something that you'll do, and then when you are done with this thing, okay, still you'll not be able to focus on 100 questions. With third week onwards क्या है? Third week, okay, up to 6th week. अभी टाइम है, दिसंबर तक मैं कह रहा हूँ जो, बट एक्यूरेसी आपकी चेंज हो जाएगी. दोज मैनी क्वेश्चंस योर एक्यूरेसी विल चेंज. Okay, you have to focus on around 30-35 questions. It is your choice. Will not be moving beyond this one. Okay, and again it will take an hour. अब ये 1 घंटे लेने वाला है. 1 घंटे क्यों लेने वाला है? Because you'll be analyzing and you'll be thinking. This is I'm telling you beta. Shorter targets na span. Focus कैसा है? Science says that you cannot focus more than 150 minutes at an average. And when you reach that level, 150 minutes you are sitting on a table, it means that you'll not be able to focus for next 2-3 hours. Okay, when you use your peak potential, you'll be get exhausted, you'll not be able to focus more. So sittings initially घर पे जब पढ़ते हैं तो 40-45 minutes की होनी चाहिए, half time. Take 5 minutes break, then start. This should be the practice. Now, okay, 50 minutes से ऊपर मत पढ़िए, 5-10 minutes का break लीजिए, फिर 50 minutes पढ़िए. Do not stretch it unnecessarily. Okay, overall focus. But can everybody do this? ठीक है, तो ये 15th दिसंबर तक आप क्या है कि तो 30th दिसंबर, बिकॉज 15 days ये क्या है, दिस इज अप टू नवंबर 15th के लिए मान लीजिए, these two up to 15th November. Okay, this is maybe 31st December तक ये करना है. Okay, tentative है ये, 1 week here and there because of Deepavali, not a concern. Okay, just do this thing, and after this, let's say January first week से अभी start करेंगे 50 questions. And I can tell you, if you have read the topics properly, okay, and you are revising, इस stage तक आते आते होगा क्या, यहाँ पे you'll have an accuracy of 80-85%. इतने में ही अचीव हो जाएगा. हमारा कंसर्न पहले क्या है? Our concern is to be accurate, because there is negative marking, right? You cannot afford to lose questions. Okay, 10% margin error तक हमें जाना है. Okay, in real exam scenario, we have to practice in a way so that we do not make mistakes which can be attributed to be more than 10%. Okay, we have to limit this thing. But यहाँ पे आपका ये achieve हो जाएगा by this time. Okay, but still the problem is like full fledged नहीं कर रहे हैं. इससे आप डरेंगे, बहुत सारे बच्चे, वो बेकार का डर है. Okay, हाँ सिखा बेटा, विल टॉक अबाउट दैट. लेकिन ठीक है, वो आप ज़्यादा टारगेट रख रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे. आई डिस्कस योर क्वेश्चन जस्ट आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग. ठीक है, नाउ फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स आई वांट एवरीवन, फुल जनवरी क्या है, यू विल बी डूइंग अराउंड 50 क्वेश्चंस. ओके, एंड अगेन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले. दिस एक्यूरेसी विल बी अराउंड दिस मच ओनली. ओके, इट विल नॉट चेंज. It will not change. Okay, when you are done with 50 question, now the choice is yours. इसके बाद का क्या है, you can go for 100, you can go for 75, and you can for 2 weeks and then you can go to 100. It's up to you. Okay, यहाँ के बाद वाला process क्या है, that can be 75 or 100 based on your preference. Okay, and if you are, I'm talking about your preferences here, initially the accuracy will again drop to maybe 75-80%. Okay, initially the moment you go there,
because still you are not trained enough to do this thing. Okay, you'll not be at ease. नहीं बेटा, ये आते हैं ना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आते हैं। धीरज बेटा, अभी तक आप क्या 50 क्वेश्चंस डेली नहीं है, 2 days के बाद वाला मैंने कहा है ना। ओके, व्हेन इन जनवरी व्हेन यू आर डूइंग 50 क्वेश्चंस, तो ये दिन बढ़ाते जाएंगे। ओके, दिस इज लाइक, यहाँ तक आप कर सकते हैं एवरी 2 days, यहाँ आएंगे तो ट्वाइस इन ए वीक हो जाएगा ये। ओके, हमें 2 से ज़्यादा नहीं करना है, ट्वाइस इन ए वीक। इसको 2 बार में करेंगे, वीक में 2 बार। ओके, धीरज बेटा क्लियर है? यहाँ 2 बार हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो 1 से वीक भी चलता है। दिस इज 1 से वीक। एंड इनिशियली लाइक एज सेड, अभी से लिख लेंगे वहाँ, ठीक है ना, बड़ा बड़ा लिखेंगे कि दिस सिचुएशन विल कम व्हेन योर एक्यूरेसी विल ड्रॉप इनिशियली। ओके, ए ड्रॉप इनिशियली, दिस विल हैपन। तो यहाँ डरना नहीं है। दिस इज द रियल थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन विद यू, यू विल बी वेरी हैप्पी बाय दिस टाइम। ठीक है ना, जनवरी एंड में आप बहुत खुश चल रहे होंगे, अचानक दुखी होंगे फेब में। ओके, so you have to know this thing कि it will drop, but it will drop only for maybe 3-4 tests. Okay, it will drop only for 3-4 tests, and you'll see that again you'll reach your peak. Okay, after that period, initially a drop initially maybe for 2-3 tests, you'll definitely face this. Okay, but after this thing, any number of tests you give, you'll see that you'll maintain an accuracy of around 90%. Because सिर्फ टेस्ट नहीं दे रहे हम, you are having more number of revisions. Okay, and every paper that you are solving, again one more thing that you have to keep in mind, you cannot leave these test papers, you have to revise that thing. Okay, either you don't give the test or make sure that जो mistakes हुए हैं, okay, you have to revision of test papers is also important. Okay, because some of the questions you'll get from here only, so that it should be part of your revision. The reason being that you'll make mistakes, na, those concepts where you are making mistake, it means that when you were reading from the book, you were not focusing enough to grasp it properly, इसलिए वो गलत हो रहा है। ठीक है, इस स्टेज में जब गलतियां हो रही है, इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा है और फिर गलत हो गया। इट मीन्स कि पढ़ते समय गलती हो गई थी। एंड व्हेन यू विल रिवाइज थ्रू दीज टेस्ट पेपर्स, ओके, then you'll not make mistakes on those topics in exam hall. Okay, and hereafter it is like, जब आप फेब में हैं, we reach this situation from March onwards, based on the situation you feel your comfort level, you can go for full tests twice a week, once a week, it's up to you. Okay, but it should not continue 15 days before exam. You have to stop 15 days before exam. Last 15 days, the only thing that you have to focus is PYQs, क्योंकि यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, एंड टेस्ट्स की अगर मैं बात करूं, इफ at an average people are scoring 60 questions, okay, same level of paper in exam hall, you will be scoring around 70. यूजुअली टेस्ट जो मिलते हैं मार्केट में वो टफ होते हैं। ठीक है, और इसका सिंपल रीज़न है, वो थोड़ा आपको डराते हैं कि आप और पढ़ें। ठीक है, उनको आपको थोड़ा सा डराना होता है ताकि आप और पढ़ें, और दूसरी चीज़ की जो एडमिशन नहीं ले रहा है वो ले ले। ये तो बोथ पर्पज़ सर्व होते हैं, तो उसका पर्पज़ क्लियर है। तो दोज टेस्ट आर गोइंग टू बी टफ, बट द प्रोसेस इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ओके, एंड नाउ टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूंगा अभी। एटलीस्ट द प्रोसेस इज क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लैरिटी है हाउ टू गो? ये हम कहाँ तक जा रहे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2 महीने आपको फुल फ्लेजेड टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग you'll get. Okay, must have to have some clarity, and first 15 days you'll see the difference.
कि यहाँ तक जाए बिना ही आपको डिफरेंस दिखाई देगा. लाइक आई सेड, when you are here, you'll see the difference. Your accuracy will improve here only. Okay, you will discover that 99% of the people will see a major change. Okay, by third week, each one of you will see this thing happening. Now, as far as time is concerned, ठीक है, time management. It is something like you are not able to manage because you are not practicing. Okay? Again, same चीज है, इसका रीजन कुछ बहुत अलग नहीं करना है आपको. Most of the people who fail to manage time are the people who are actually not practicing. Okay, so you'll see that when you first time you try to solve the 15 questions. Okay, first time you try to solve the 15 questions, you'll be slow. By the end of the 100 questions, you'll be fast enough. Okay, you'll be faster. But सिर्फ वो तरीका डायरेक्टली पढ़ते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, इज इट अ गुड आइडिया? ओके, टाइम मैनेजमेंट प्लस हाउ टू गो अबाउट क्वेश्चंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ओके, सो दे आर गोइंग टू बी 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस in every MCQ, every test and in exam hall as well. Okay, questions कैसे होंगे, और ये एक फीलिंग के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये रियल नहीं है. यू नो, ओके, द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन यू विल थिंक दैट आई नो. ओके, यहाँ मार्जिन ऑफ एरर आपका 5 to 10% होता है. Your brain is fresh and this is the one which helps you to clear. Okay, second type of questions, some confusion. Okay, 50% 75% आपको लगता है. हाँ चेतन बेटा, इट्स अप टू यू. सेम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसके 15 कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. Okay, subject wise you can do, full test later you can do. Okay, that is up to you. If you have covered whole of the syllabus, you can start with full length test. Full test का मतलब 100 क्वेश्चन मैंने कहा था, not all subject. Okay, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. Take one subject, you are reading polity, take polity and do that thing. Okay, then you are reading science and tech, next week do science and tech. तो ऐसा नहीं है कि 100 उसी पेपर का करना है. अगर आप 50 कर चुके हैं और फिर क्या है कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा वाला करिए. ओके, थोड़ा तो एडजस्टमेंट आपको करना होगा ना पेपर में. ओके, बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट यू हैव रेड. नहीं पढ़ा हुआ सॉल्व करेंगे तो यू विल ऑलवेज मेक ए मिस्टेक ना. फिर हाउ यू विल गेट कॉन्फिडेंट? पढ़ा ही नहीं और सॉल्व किया और नहीं हुए, सर की टेक्निक काम नहीं करती है. ये ऐसे नहीं पढ़ा हुआ तो गलत होना ही है. ये जो पढ़ चुके हैं उस पर ट्राई करना है, राइट? तो सम कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस कि यहाँ एरर का मार्जिन आपका मे बी 25% to 50% तक हो सकता है. ओके, बट यू विल बी फोर्स्ड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, हाफ ऑफ देम. एंड थर्ड क्या है? नो आइडिया. ओके, बट नो आइडिया कैसा है? सम कंफ्यूजन, नो आइडिया क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस even after understanding the meaning. The meaning of statements. You fail to have an idea. Okay, so I'll explain this thing more. इसी सेशन में हम थोड़ी देर बाद इस पे बात करेंगे, ठीक है? बट नाउ आई एम स्पेसिफिकली आई एक्सप्लेन कि व्हाट इट मीन्स. क्योंकि हमें क्या है, द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन समटाइम्स यू डिसाइड कि ये मुझे नहीं आता है. दैट इज नॉट ट्रू. दैट इज नॉट ट्रू. मेनी अ टाइम्स वी सी दैट इट इज आस्किंग अबाउट सम XYZ. अरे मुझे क्या पता है XYZ क्या है, भाग गए. डोंट डू दैट. यू नेवर हैव टू डू दैट. ओके, so when you are reading for the very first time, हमें no idea क्या है,
रीड करके भी नहीं समझ में आया तब नो आइडिया कैटेगरी, एल्स everything is in some confusion. Okay, if we read the question and we feel like कि polity में ऐसा था, environment में ऐसा था, if we combine the knowledge of polity and environment this can be solved, तो वो क्या है, इस category में आएगा. Some of the questions you have not read, some of the topics you have never heard of, still you'll be able to solve by just understanding what the statement says. Okay, तो उसके बारे में मैं और सेशन लेने वाला हूँ. I'll take few more sessions on that, how to get answers even when you have not read. Okay, I'll do that for you. But अभी ये समझिए. So this is the thing that you have to attempt. Okay, 3 type of questions are there in the paper. When you are reading the question paper, your purpose is to make sure that you are solving some of the questions, and then you're leaving some of the questions. When the situation when we lose time is what? ये हमें पता ना हो कि कौन सा सॉल्व किया है और कौन सा छोड़ दिया है, तो हम सारे फिर से दोबारा पढ़ने लगते हैं. Okay, now in exam hall you have to be wise. Okay, for example these type of questions, at least first time जब हम पढ़ रहे होते हैं, they are very easy question, you directly know, will mark them, then and there mark them, solve them. ठीक है, वो गोले भी भर दिया and everything you have done. Okay, now this type of question, use some symbol. Okay, that is up to you. For example ऐसे questions में एग्जाम में 2 टिक लगाया मतलब come back to this later. ये घर पे ही प्रैक्टिस करनी है आपको. प्रैक्टिस इन दिस मैनर ओनली व्हेन यू आर सॉल्विंग द पेपर्स एट होम. डू दिस अगेन. ओके, कम बैक टू दिस. और मे बी किसी ने क्वेश्चन कोई गोल कर दिया, जो भी आपको सिंबल यूज करना हो, बट दैट सेव्स टाइम. एंड देयर आफ्टर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नो आइडिया, सीधे पेपर में ही काट देंगे. सुंदर पेपर घर ले आके करना क्या है? क्वेश्चन पेपर मेरा साफ दिख रहा था, इससे मुझे क्या है? You have to save time. ये वाला जो हमें पता है कि we try to understand the meaning of the statement that is given and still I am not able to do that, उसको काट दीजिए. ठीक है, and then just making a simple change, you'll see that when you flip through the pages next time you see only these questions. और ये कितने होंगे? हाँ हाँ स्वाति बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, काट दिया, ऐसा कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है. वो आप घर लेके आते हो ना, लिखना बहुत अलाउड नहीं होता है. That kind of symbol, ticks and everything you can do. Okay, so getting my point, because you have done this question, there is no symbol. Okay, so you'll not see this thing because इस पे कोई symbol नहीं है, मतलब ये मैंने solve कर दिया. Here is a symbol that is correct or round, it means this is the question that I have to see again. Now this type of question है ही नहीं. So ultimately when you are done, first reading of 100 questions when you have done, you have identified this thing. Next reading you get a lot of time. Okay, because you exactly know कि these are the questions. अभी 15 में जब आप करेंगे तो ऐसे 3 होंगे मे बी. ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे, दोबारा you'll try to attempt. Automatically when you have planned the things well before you enter the exam hall, you save time. अभी मुझे बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ये प्रॉब्लम फिर से वो वाला क्वेश्चन पढ़ लिया जो सॉल्व कर लिया था, या फिर से वो पढ़ लिया जो होना ही नहीं था? ऐसा होता है? If you have solved the question paper, Usha beta, 100 questions, did you experience that? When you try to reread the question paper, most of the people waste around 5 minutes to read even those questions which are impossible plus which they have already done. Okay, उसमें नज़र चली जाती है. But when you mark it, okay, you give certain symbol, okay, the brain, it moves fast. Okay, then you get more time, you can pay more attention, you get few more minutes. And 2 minutes भी ना एग्जाम हॉल में बहुत होते हैं. Okay, so just a small change in approach, you'll see that you'll start saving time. Plus with practice you'll be fast. Okay, you'll be fast. तो these questions जो डायरेक्टली हो जाते हैं एग्जाम हॉल में, आज के टाइप में भी देखते हैं तो अराउंड 35 होते हैं ये. Okay, 35 to 40 because influenced by PYQs, your readings and everything. तो फर्स्ट रीडिंग में ये हो जाता है. ओके, तो इसमें से 10% एरर है, मतलब यू डू 40 क्वेश्चन, 4 गलत हो जाएंगे, स्टिल आपको पता है 36 करेक्ट हो गए.
then you come to this segment, you get more time, you think and you do this thing even with 50% accuracy, पेपर क्लियर हो जाता है, you score more than 50. ये तो हमें करना ही नहीं है. Okay, so just try this thing. Okay, next session, if you face any difficulty by doing it, okay, until and unless you do, I keep telling this thing, you'll not learn. You have to practice it. हाँ प्रियांशु बेटा, आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको कर लेना है. जस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग एंड री रीड द क्वेश्चन, यू विल सेव अराउंड 5-7 minutes 10 minutes. ओके, और ये बड़ा सेविंग है. बहुत लोगों को लगता है यू कैन हाफ द टाइम, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. इफ इनिशियली यू कैन सेव 10 minutes, ओके, it means that over a period of time you'll be saving lot more. Okay, you'll be saving a lot more time. With practice you'll become faster. Okay, you'll become faster. And another approach that you can use to become a little faster is like change the way you read. अभी टाइम है थोड़ा, 15-20 minutes भी पेपर में ट्राई करेंगे तो you'll become faster. At this point in time, what is the approach? How do you read? You read every word. ठीक है, हमने लिखा है कि how are you? Okay, I've written this thing. Since childhood, we have a habit of reading how are you? Okay, so a small change that will help you in CSAT as well, reading comprehension. Okay, try to not move your eyes when you are reading something. Broadly एक बार देख के पढ़ लेंगे, ऐसा कोशिश कीजिए. ओके, ये सेकंड्स में सेविंग होती है, लेकिन अल्टीमेटली पेपर में 2 मिनट 3 मिनट बच जाते हैं. okay? क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस, जस्ट ट्राई नाउ ओनली. 90% ऑफ यू व्हाट यू आर डूइंग, एक बार इस पे नज़र है, फिर इधर है, फिर इधर है. आई एम आस्किंग यू कि नज़र हिलाना नहीं है. 3 ही तो वर्ड है, एक बार में देखिए हाउ आर यू, फिर नेक्स्ट पे जाइए. A very small change can make you lot faster. This is a very small change that you can do, you'll become very faster. कितने बच्चे हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं? अभी पढ़ के देखिए, आपको दिखाई देगा आप सिंगुलर पढ़ रहे हैं, आपको फील होगा कि नज़र मेरी ऐसे ऐसे जा रही है. ठीक है, सिंपल चेंज. दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन द एग्जाम हॉल, बट revisions will become a lot faster. Okay, पढ़ के देखा अभी किसी ने, ऐसा होता है सिंगुलर 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 मूव कर रहे हैं. वेरी स्मॉल चेंजेस हैं. ठीक है, एंड दिस इज द रीजन कि इस सेशन का नाम स्ट्रेटजी है. ठीक है, एवरीथिंग दैट यू डू टू सेव टाइम एंड दैट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, वी आर डिस्कसिंग दैट थिंग. Okay, small changes makes you lot faster. Most of the people don't try this thing. Okay, बहुत छोटा सा चेंज है, पहले 3 वर्ड फिर 4 वर्ड, ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. बाय द एंड ऑफ दिसंबर you'll see that you are lot faster. Okay, somebody who is reading the paper twice, they are able to manage because they have efficient ways of reading. ठीक है ना, वो क्या है, because some of the people, I even practice this thing and I just don't move my eyes when I'm reading the thing. Okay, it came with practice. This is something that I'm telling you. It makes you a lot faster in exams, and this is not something that मुझे बचपन से पता था. ठीक है, when I was trying for CAT exam and we had comprehensions there as well, तो मुझे एडवाइस किया था किसी ने and it worked. Okay, I was very fast while reading the comprehension and that helped me here as well when I started with preparing of the civil services. Vivan beta, you have to improve your language. ठीक है ना, when you are reading your book, you should know all the words at least that you are reading. आपकी नोटबुक में जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको नहीं आता है, यू आर रीडिंग फॉर लास्ट 1 year, तो वो गलती हो रही है या आपको पता होना चाहिए. इवन इफ यू like I said, you are reading what I taught you in geography and you have no idea कि what the exact word is that is in your notebook, तो वो फिर गलती है ना, पढ़ने का अप्रोच में गलती है. Improve your vocabulary, at least know the things that is in your notebook. वो भी आप गेस कर लेते हैं कि ब्रॉडली समझ रहे हैं, तो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच ना. नो द एग्जैक्ट मीनिंग. इफ यू नो एवरी वर्ड इन योर नोटबुक, देयर विल नॉट बी एनी पैराग्राफ दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड. बहुत सारे बच्चे काम ऐसे चलाते हैं कि ब्रॉडली मीनिंग समझ में आ रहा है,
तो एटलीस्ट अपनी नोटबुक के वर्ड्स का मीनिंग जानिए, एंड देन यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। ओके, तो ये भी आज से करना है आपको। ओके, सेविंग टाइम। ओके, दीज टू स्मॉल चेंजेस, दिस वन एंड दिस वन, डू इट फॉर 15 डेज। मैं ऐसा कोई भी चीज़ मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है, इफ़ यूल प्रैक्टिस फॉर 15 डेज इट विल हैपन। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू समथिंग विच विल yield you results after 5 months। ठीक है, आप 15 दिन बाद आके मुझे बताइए कि सर आपने बताया था वर्क नहीं किया, तो आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, 5 महीने बाद तो आप ही भूल जाएंगे। जस्ट डू इट फॉर 15 days एंड जस्ट टेल मी कि इफ यू आर फास्टर और नॉट। यू विल बी, आई नो, बिकॉज आई was faster with this thing। Okay, this is something that I have experimented with me, so I'm pretty sure that it works because many of my friends used to do that। Okay, and this is something I have suggested to many people and they have used this technique and they have improved। Somebody told me, I'm giving it to you, use it। Okay, so these two small changes in your approach, you can read fast। Okay, and when you read fast, it simply means that you'll have more time, you can read the questions which seem difficult। Okay, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? थर्ड एस्पेक्ट जो अभी बचा हुआ है उस पर फिर बात करूंगा। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस और नॉट? अब इसकी बात करूंगा कि क्वेश्चन टेस्ट में ही कैसे सॉल्व हो जाते हैं, इवन इफ यू हैव नॉट रेड दिस टॉपिक, हाउ यू कैन सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप ये वाला अप्रोच टाइम वाला थोड़ा इजी हो गया। ओके, नाउ डिस्कवरिंग विच इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, विच इज नो आइडिया क्वेश्चन। Because many a times if you read the question only, you take a flight to the next question because you feel like you don't know, but this is not the reality। ठीक है, वो रियल नहीं है। कई बार क्वेश्चंस में आंसर छुपा होता है। सबसे आसान क्वेश्चन कौन होते हैं? ओके, द इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस विच, जिसको पढ़ते ही आपको पता होता है कि ये गलत है, हम पढ़ते नहीं है। ओके, सो the approach has to be, whenever you are solving the question, read the statement, read the full statement। यहाँ क्वेश्चन दिया है, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ ऑप्शन में कुछ स्टेटमेंट दिया होता है, ए बी सी डी। ओके, सो सिंपली रीड द क्वेश्चन, try to understand the meaning। okay, and you'll see that some of the statements are like unreal, वैसा हो ही नहीं सकता है। okay, some village everyone is bad, some extreme thing will be written, you'll directly discover कि ये वाला गलत है। okay, and when you'll go to the option, आपको आंसर मिल जाएगा कि वो मिल जाता है। ठीक है, so first thing that never leave a question because you read some word here that you are not familiar with। okay, अभी कैमल डजंट ब्रीथ लिख देगा तो सबको पता है ना, कैमल इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ब्रीथ करता होगा। ओके, सम स्टेटमेंट सेज दैट, अब कॉम्प्लिकेटेड पे आते हैं अगर। ओके, सम स्टेटमेंट सेज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, अलोन कट द फॉर विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट, कट द फॉरेस्ट ऑफ सर्टेन रीजन। ओके, और देयर इज अ सम पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन वेयर central government took a decision that education of this area will be in this manner। वो गलत है ना, क्योंकि आप पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं? फॉरेस्ट, एजुकेशन। ओके, द क्वेश्चन इज ऑन पॉलिसी, और आपने वो पॉलिसी नहीं पढ़ी है, बट आपने पॉलिटी में क्या पढ़ा है कि स्टेट हैज कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट, स्टेट कैन डिटरमाइन द एजुकेशन दैट हैज टू बी इम्पार्टेड टू द पीपल ऑफ द रीजन। ओके, और वहाँ पॉलिसी में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, यू गेट ए स्टेटमेंट वेयर द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट सेज कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिड इट बाय इटसेल्फ विदाउट कंसल्टिंग स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू बाय विदाउट कंसल्टिंग स्टेट। तो ये गलत हो गया। हमने पॉलिसी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पॉलिटी तो पढ़ा है। सिमिलर सिचुएशन विल बी विथ साइंस। सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो। Okay, some of the questions that we see, we feel like we have not read, but when you'll read the thing, you can
link it with something that you have read, okay, and then you can easily mark those questions. So first thing is, never leave a question without reading each statement. Read everything, okay, because some other concept will suddenly strike your mind and you'll be able to solve. ये clear है कि नन कैटेगरी में ये नहीं है कि हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, XYZ पॉलिसी, okay, maybe we have not read this XYZ policy or technology, okay, but you know the basic concepts, you know the constitution, what is possible, what is not possible in our country, what can be the limitation of a technology, what cannot be with certain program, okay, based on that you will be able to solve. तो ये नन वाली कैटेगरी का क्वेश्चन कभी नहीं होगा. I'll take one session where I'll show you कि how UPSC has actually done this thing. Okay, वो गूगल पे भी डायरेक्टली नहीं मिलता है, लेकिन आंसर कैसे मिल जाता. Some of the aspects that are very difficult. पॉलिसी में लास्ट में दिया है 4000 वर्ड्स, कौन पढ़ता है एक पॉलिसी का. But based on the concept that you read in polity, based on the concept that you read in science, based on the concepts that you read in geography, you can solve those questions even if you haven't read it. ठीक है, तो क्लियर हो गया. नो आइडिया कौन है? स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कॉल लेनी है. एवरीवन, विक्रांत, चेतन, स्वाति, सुधा, विवान, धीरज, प्रियांशु, everyone, Suraj, got this point or not? Because now you are starting. ठीक है, हम और सेशन लेने वाले हैं. I'll not bombard with you with many ideas in a single day. Okay, the reason is that you have to implement the things slowly. Okay, by the time you reach February, March, I'll give you everything. Okay, अभी छोटे छोटे steps में जाएंगे. We'll try to improve certain aspects. Okay, every 2-3 weeks we'll try to improve certain aspects. Because if I'll talk about everything in a single session, you'll not be able to improve even a single thing. Okay, because nobody can improve everything at a same moment. Okay, so the idea of taking these sessions after a gap is so that you start moving in the right direction. You can detect the problem with the things that you are facing. Then you can ask me in another session or over the Telegram channel so that I can clarify and you can improve that aspect. ठीक है, फिर next aspect पे जाएंगे. And by the time we enter March, I can assure you that most of you who are following the things that I'm suggesting will be able to do the things that I said. Okay, the accuracy levels and time management and everything, the way it is happening. Okay, you will yourself discover after 15 days. पहले 15 दिन ईमानदारी से करिए और उसके बाद क्या है कि you'll yourself experience. Okay, this is something very basic. Okay, lot of things, blah blah blah, everybody is telling. Okay, but I'm talking about the things that actually happens, okay, with you. I'm talking about the things that I have experienced. Many of the students whom I teach have actually experienced and we have discussed. ठीक है, and some of the aspects आपको खुद लग रहा होगा कि आपके साथ हो रहा है. And these are the practical things that you need to improve. Okay, only reading से हो जाता तो सबका हो जाता, only revision से हो जाता सबका हो जाता. Okay, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में बहुत लोग सीरियस नहीं होते हैं, 5वें में जाके भी सीरियस नहीं हो रहे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज लाइक इवन इन 5th अटेम्प्ट सम ऑफ द पीपल आर लाइक व्हाट, यही इंप्रूव नहीं करते हैं. okay, तो फंबल करते रहते हैं. और ये गलतियां मैंने भी की. कि आप किसी ना किसी स्टेज पे वो गलती करते हो, इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं. फाइनली यू गिव क्लियर प्रीलिम्स, क्लियर मेंस, गिव इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, बट एट सर्टेन स्टेज वी मेक्स blunders. Okay, I'll not call them mistakes. These are blunders which actually not allow you to get selected. Okay, क्योंकि हम खुश हो जाते हैं ना, हमने मेंस लिख दिया है, इंटरव्यू दे दिया है, that kind of feeling, it kills us. If we become reluctant. So those who work on small mistakes, minor mistakes, these are the people who actually improve their chances of qualifying. तो ये छोटी छोटी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है.
And in this session, MCQ time management, हमने बहुत ही छोटी चीज के बारे में बात किया है, but we have taken almost an hour. So I hope that all of you will be able to at least implement these things, okay, for next 15-20 days. And our another session is like it will be after 25th November. तो आपको कोई सवाल है तो Telegram I'll respond. Okay. Vivan beta, you just need to read that topic over Wikipedia. Every book you'll find this thing. Okay, errors होंगे. But search over Google, whatever is given in Wikipedia, read that thing, copy paste that thing somewhere, get a printout, use it. Okay. क्योंकि explanation when you are reading it is wrong, you discover. So Google it. Just either you can write in your book that you are telling, दिशा वाले किताब में ही लिख लेंगे. और ज़्यादा easy way क्या है, copy paste करके एक जगह रखेंगे, उसको revision करेंगे. Okay. And for next 25 days, 15 days you'll discover. But next 25 days, I expect you to do this thing. Okay. And like I said, the very next session will be after 25th November because I'll not be available here. Okay, I'm going to my native place. So 25 November के बाद हमारा जो session होगा उसमें make sure that you inform me the exact problems, okay, over the Telegram group as well, so that I'll help you to make little changes, not much, and you'll start getting the results. ठीक है, वो जो आपको outcome चाहिए वो वहाँ मिलने लगेगा. Okay. So this thing, just implement this thing for next 25 days, and everyone who failed to cover those two small subjects, do it now. ठीक है, अब तो कर लीजिए उसको, पॉलिटी आधा करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज 1 वीक आई नो कि मैं मान के चलता हूँ कि पढ़ाई कम होगी. 0 पढ़ाई सिर्फ दीपावली के दिन होनी चाहिए. Okay, but revisions don't leave. Even if you are going home, click pictures of your notebook. Okay, some of the people are like, who will carry the books for 1 week? Click pictures. 100 pages का फोटो खींच के जाएंगे, 7 दिन में 100 पेज पढ़ना है. That has to be the target. ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं. Okay? And if you are clear with the thing, so this is what I wanted to discuss with all of you. And if you have any other question, anything which is coming to your mind, you can ask. Okay? But our sessions will be stressing on singular points which will improve you. Okay? Every session that I'll be taking, I'll definitely help you improve in next 15 days. Every next 15 days, you'll be more confident that you'll clear the exam. Okay? We'll be doing things more strategically, I'm not going to bombard you with material. मैं अपनी जिम्मेदारी खत्म करना है तो क्या है, आपको इतना बड़ा टारगेट दे दूं, फिर सही सर हमेशा राइट, बच्चा हमेशा रॉन्ग, क्योंकि टारगेट पूरे नहीं हो रहे. But I am giving you small targets and I expect that you'll follow and you'll be able to manage. Okay. I'm just asking you to change the way. Source change नहीं करना है, number of hours change नहीं करने. ठीक है, एक पेपर किया 2 घंटे में कर रहे हैं, 3 घंटे में कर रहे हैं, तो मैं बस चाहता हूँ कि उसको ब्रेक करके कर दीजिए. okay? तो टाइम आपका उतना ही लग रहा है. I'm just changing the way you are doing things. Okay? And it is based on the experience that I have gathered while I was preparing, and plus since I started teaching, because these ways which helped many of my students to clear the exam, and it will definitely help you to clear the exam. Okay? Approach is more important, क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं जिनको पास होना है. Okay? So I hope that everybody is clear with this thing. Okay? Because next session will be after almost 25 days. By that time, try to figure out other issues that you are facing. I'll be available over Telegram. But live session, and after this said date, we'll be more frequently doing it. Okay? Because, and some of the people who are like 24 का नहीं होके 25 वाला, उनके लिए भी हम कुछ अलग सेशंस करेंगे. But now this 2024 prelims will be doing everything that helps you to clear the exam with ease.
ईज का मतलब नहीं पढ़ेंगे नहीं होता है, कि ढंग से पढ़ेंगे, राइट अप्रोच, improving your lacunas, this is the approach, and be doing it slowly, but accumulated outcomes you'll see that you'll get the things done. ठीक है, तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट एवरी 15 डेज 20 डेज, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, वो बल्क हो जाएगा, पेपर क्लियर हो जाएगा. ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेरी दैट इज कमिंग टू योर माइंड, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ लेंगे, I'll reply there. Okay, but still I'm giving you 1 more minute so that you can think of any question that you might want to ask. Okay, and those who have not started but still you have in mind 2024 देना है, तो this is the time start. ठीक है, दीपावली के दूसरे दिन से डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट, क्योंकि थोड़ा समय जाने वाला है कुछ ना कुछ करके. स्वाति बेटा इसको करेंगे, दीवारों पे चिपकाएंगे और करेंगे. okay? नहीं हो पा रहा है जैसी सिचुएशन में कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, रिविजन इज मस्ट. वो अच्छा नहीं लगेगा, वो ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं इसलिए ज़्यादातर लोग फेल होते हैं ना, आपको ये समझना है. दिस इज समथिंग विच इज द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल फेल. वो आपको नहीं बनना है. रिविजन नहीं हो पा रहा है वो सोचना ही नहीं है, करना है. फोर्स योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ, ये वाला जस्ट टेल योर सेल्फ इफ आई विल नॉट रिवाइज आई विल नॉट बिकम IAS. फिर रिविजन होता है कि नहीं मुझे बताएंगे. वो 15 मिनट्स ही लगने हैं बच्चे, उसको करेंगे. रिविजन इज मस्ट. Those who don't revise, they are the people who are actually really working hard but still they fail. ठीक है, फेल होने वाली जनता वही है, खुद से जबरदस्ती थोड़ी करनी होगी. ठीक है, IAS बनना है आपको, not some job. Okay, it is not some job, it is the most powerful, most glorified job in our country. ठीक है, इससे अच्छी जॉब है नहीं. तो सबसे अच्छी जॉब पाने के लिए मन की चीज़ें करके हो जाएगा ऐसा नहीं है. जस्ट फोर्स योर सेल्फ फॉर रिविजन्स. अच्छा लगता है बुरा लगता है ऐसा सोचेंगे ही नहीं, अच्छा ही है, करना ही है. ठीक है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है रिविजन का, करना ही करना है, अच्छा लगे बुरा लगे. IAS बनना है तो रिविजन करना है. ओके, so do these things, and if you face any more difficulties like I said, you can reach out to me on Telegram. Okay, and the next session will be after around 25 days. Okay, I'll not be available here, but we'll have live sessions regularly after November. ठीक है, December से we'll be doing it more frequently and we'll be focusing on aspects which will help you to clear this time. नहीं विक्रांत बेटा, इरिटेट नहीं होना. यू जस्ट हैव टू स्टे काम. यू मस्ट ट्राई टू स्टे काम. You get irritated with yourself because you have more targets than what reality is. ठीक है, अभी मैंने पहले भी कहा, if you'll try to achieve 200 pages, your capability is 100 pages, you'll get frustrated. थोड़ा ज़्यादा टारगेट करेंगे. You just have to target a little more, not something which is like too much for you. हाँ धीरज बेटा, क्योंकि ये चीज़ें करते रहेंगे. स्टे पॉजिटिव. अब बिल्कुल हो सकता है टाइम बहुत है. सुधा बेटा, रिवीजन इज द वे ना. व्हेन यू आर डूइंग रिवीजन, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दूसरा छूट रहा है, द वे आई हैड आस्क्ड एवरीवन टू रिवाइज. देयर विल कम ए डे व्हेन यू आर रिवाइजिंग वन सब्जेक्ट, यू आर रीडिंग अदर सब्जेक्ट इन द सेम डे. यू आर reading current affairs, revising geography, revising history. So this situation will come, and the fear that you are talking about कि ये पढ़ रहे हैं तो वो छूट रहा है, वो बंद हो जाएगा. Okay, with more number of revisions you will be revising the subjects in a matter of days only. There will come a situation when you will be revising, like I had informed you earlier, spectrum इतनी मोटी किताब आती है, used to revise that thing 1.5 days 2 days में हो जाता है. With more number of revisions you will be also in that kind of situation. पॉलिटी की नोटबुक होती है, you'll revise in single day.
1.5 days में भी, ओके, जो आपका नोटबुक में लिखा हुआ है. तो बाय दैट थिंग what will happen, a situation will come with more number of revisions where you will be revising everything within 10 days. तो such fear will subside. जब 10 दिन में सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर पा रहे हैं तो आपका डर थोड़ा कम हो जाएगा. और फिर भी डर लग रहा है तो PYQs को एक बार में फर्स्ट टू लास्ट पढ़ेंगे. ओके, वो 3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाता है. यू टच एवरी सब्जेक्ट, यू बिकम कॉन्फिडेंट. व्हेन आई आस्क यू टू रीड PYQs every day, the reason is very simple, that when you read this thing na, PYQs are like 60% of the things, 70% of the things that you read from books, those concepts. So when certain fear like this is there, 2 घंटे रोज उसको दे देंगे, 10 दिन में आप हर सब्जेक्ट टच करते हैं, you'll be confident. Okay? We have to teach our brain कि हमें इसे कंट्रोल करना है, इसे अपने आप को कंट्रोल करने मत दीजिए. ब्रेन इज लाइक वॉट, आप डरेंगे तो ये बहुत डराता है, और इसको कहेंगे कि हो रहा है तो इसको लगता है हो रहा है. ठीक है, वेन एवर द फियर ग्रिप्स, PYQs पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट का पढ़ लेंगे, 10-12 पेजेस, 15-20 पेजेस. ओके, यू कैन रीड अप टू 50 पेजेस इन अ सिंगल डे. तो PYQ ऑफ इन्वायरमेंट, PYQ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, PYQ ऑफ मे बी पॉलिटी, सम चैप्टर्स. नाउ यू नो कि एवरी सब्जेक्ट रिवाइज हो गया. ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू ट्रीट योर सेल्फ वेल. ठीक है, खुद को भी खुद से कन्विंस करना होता है. उसके ये छोटे छोटे तरीके होते हैं. वेन एवर यू फील लाइक कुछ छूट रहा है, गो थ्रू PYQ ऑफ दैट सब्जेक्ट, यू विल फील कॉन्फिडेंट. बिकॉज सिटिंग आइडल एंड रिकॉलिंग एनीथिंग यू विल नॉट रिमेंबर, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MCQs ना. तो वो जब क्वेश्चन देखेंगे तो सॉल्व होगा इफ यू विल डू रिविजन्स. Okay? So don't be in fear, you'll be able to manage. Just believe you can manage because you are giving those many hours. You are revising properly. अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो डर लगेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर मेरे पास तो नहीं है. ठीक है, एंड जस्ट हैव फेथ इन अलमाइटी. ठीक है, वो आप इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो आपके साथ बुरा नहीं करेंगे. ठीक है, so have faith in God, have faith in your parents, have faith in your hard work. Okay, and you'll definitely excel, you'll definitely do better. Okay, and this is all that you can do. ठीक है, अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, सेटिस्फेक्शन होगा, डर खत्म हो जाएगा. मैं इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकती थी, मैं इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता था. ठीक है, उतनी लिमिट तक लेके गए तो फिर फियर खत्म हो जाता है. अपना बेस्ट दिया है ना हमने. Okay, so I hope that everybody is clear with the things that you're supposed to do in next these many days. Practice the thing for 15-20 days. I am pretty sure that all of you will be able to manage, and in case you face any difficulty, reach out to me over Telegram whenever I'll get time, because I'll be on move. Okay, so whenever I'll get time, I'll respond and definitely try to help you so that you can improve on those aspects, and it's very much doable. ठीक है, दीपावली के बाद भी जो बच्चे बहुत ढंग से स्टार्ट कर देंगे वो पास होने वाले हैं. ठीक है, बट चीज़ें जो बताई गई हैं उसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. ओके, so I'll stop here only because I do not see any more questions on board here. So I feel like we have discussed the things that were important and are important, will remain important till you clear the exam. So make sure that whatever I have discussed, you have, whatever notes you have made, okay, keep it handy. वो पास होना चाहिए, दफन नहीं हो जाना चाहिए दूसरे नोटबुक के नीचे. ठीक है, वो पेजेस ऊपर रहने चाहिए. You just have to make sure you are looking at it and you are following the things for next 15-20 days. It will become a habit for you. And when you make a good habit, okay, when you make a good habit, you'll yourself not be able to leave that. ठीक है, वो क्योंकि आपको इतना फायदा होगा कि आप छोड़ नहीं पाएंगे वो. ओके, शिवांशु बेटा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. लाइक आई सेड, हमें पेशेंस रखना है. वी हैव टू बी स्लो. बुरा नहीं है कुछ. IAS 30 साल की एज में कोई बनता हो, कोई 21 साल की एज में बनता हो, सेम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, सेम काइंड ऑफ लाइफ.
ठीक है, कोई 5वें अटेम्प्ट में बनता हो, कोई पहले में बनता हो, सेम काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो नंबर ऑफ आवर्स डजेंट मैटर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज अचीविंग। ठीक है, कम एज में बहुत सारे बच्चे हुए हैं, सबका नाम पेपर वाले छाप रहे हैं? नहीं छाप रहे हैं। गेटिंग फर्स्ट रैंक इज लक, पेपर में बहुत सारा हल्ला हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे क्या हैं? वही पर्क्स, वही प्रिविलेजेस, वही पावर इंजॉय करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव, and you need little more. When you have 4 hours, it means that you need 1.5 years to prepare. Okay, जब आप ये समझ लेते हैं कि ये वाला नहीं, अगली बार मुझे करना है, तो आप स्टेबल रहते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम यू विल क्वालिफाई। जो लोग क्या है कि नहीं मेरे पास कम टाइम है इसी बार करूंगा, वो क्या है कि छोड़ देते हैं। वो नहीं बनना है हमें, छोड़ के भागने वाला बनना ही नहीं है हमें। Every working professionals who are trying to give this exam, you just have to keep patience and a little more time. Okay, and time in a sense is like, let's say 1.5 years, और वो हो जाएगा। just practice the things that I have suggested and you'll be able to get it done. Okay, don't be afraid. ठीक है, हम चाहते हैं कि अभी हो जाता, लेकिन हम प्रैक्टिकल रहें तो हम अचीव कर लेते हैं। ठीक है, और इम्प्रैक्टिकल रहेंगे तो वो अचीव ही नहीं होगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, उससे हमें बचना है। just have to make sure that you are not getting frustrated because something is not in your hand. Okay, this is not something that you can control. Number of hours you can't control, efforts you can. So just put in more efforts and you'll see that you can achieve the thing. Okay, you can definitely get through this exam. Quality is more important. Number of hours, yeah, they allow you to bring in quality. Okay, but you cannot stretch it more. But 4 hours, Saturday, Sunday, maybe 7-8 hours, Saturday at least एक दिन, या Sunday एक दिन, 7-8 hours, average will be 5 hours, and that is good. That is good. When the process is right, outcomes definitely are gonna be right. Okay, just have faith. Okay, go slow, give your best, qualify. Success is more important. Okay, you just have to get it done. तो टारगेट्स थोड़ा आगे बढ़ा लेना बुरा नहीं है, छोड़ देना बहुत ज़्यादा गलत है। Okay? So everyone, if you'll have any more questions, I'll be available over Telegram. Do reach out to me, and whenever I'll get time, I'll make sure that I help you out. I suggest you something which can work for you. Okay, and stay positive. Believe you can. Give your best efforts, and definitely you will. So everyone, stay healthy, stay blessed. Thank you. Thank you very much.